Sri Akrura Ghata, Mandal, Uttar Pradesh, India. On the road between Vrindavana and Sri Mathura, on the bank of the Yamuna, is Sri Akrura Ghata. This is the place where Sri Akrura took his bath. Another name of this place is Brahmahata. One who bathes here will attain liberation from the ocean of material existence. Mentioned in Sura Purana, anyone who bathes in Akrura Tirtha, the most holy water, which is very dear to Lord Hari and which destroys all sins, on the full moon night, particularly the full moon night of Kartika, will be liberated from the material world. Mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita, one day Mahaprabhu sat on the Akrura Ghata and thought to himself, at this Ghata Akrura beheld Vaikuntha and the Vrajavasis had darsana of Goloka. Saying this, the Lord jumped into the water and remained submerged. Seeing this, Rajapudi, Krishnadasa cried out loud and Balabhadra Bhattacharya quickly came and took the Lord out. How to get there? You can easily go to this place by auto from Vrindavana. आप जो देख रहे हैं सामने बीच में ये है अक्रूर महाराज, और जो बंसी वाले हैं ये है कृष्ण कन्हैया, और जो हमको धाड़ दिए हैं वो बड़े भाई बलराम जी हैं। ये अक्रूर घाट मंदिर है, भागवत के अनुसार 5,500 वर्ष पुराना स्थान है। जब कंस के आदेश अनुसार अक्रूर जी गोकुल गए थे कृष्ण को लेने के लिए, वो मन ही मन व्याकुल हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। चिंता क्या थी, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको मैं ले जाऊंगा, कंस इनको मार देगा तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने ना तो रात भर सोए, ना कुछ खाया ना पिया। जब प्रातःकाल चलने को तैयार हुए तो यशोदा मैया ने बच्चों के लिए पकवान बनाए, क्योंकि सफर में जाएंगे तो बच्चे खाएंगे, और माखन भी रखा था। मैया अपने बच्चे को दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, इसलिए उन्होंने ये पकवान बनाए थे। जब उस समय ना तो ये गाड़ी थी, ना पक्के रोड थे, जंगल के कच्चे रास्ते थे, रथ यात्रा थी, पैदल यात्रा थी। तो जब सुबह वहाँ से रथ में चले तो शाम होते होते यहाँ तक आए तो कन्हैया जी बलराम जी से कहने लगे, भैया ये भक्त हमारा बड़ा विचित्र है, ना तो कुछ खा रहा है ना हमें पूछ रहा है, आज भी भूखा है और हम भी भूखे हैं। तो कन्हैया बलराम जी बोले कन्हैया से, कन्हैया इसका उद्धार यही कर दो, क्योंकि जमुना का किनारा है, शांत वातावरण है। तो कन्हैया जी ने अक्रूर जी से कहा, काका आप भी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो अक्रूर जी कहने लगे, नहीं विश्राम तो हम अक्रूर में लफड़ा नहीं करेंगे। तो कन्हैया जी बोले, भाई ये मानेगा नहीं और अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा है। तो कन्हैया जी ने अपनी योग माया से रथ के घोड़े जाम कर दिए। जब रथ के घोड़े जाम हो गए तो अक्रूर जी विवश हो गए। जब अक्रूर जी विवश हो गए तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम विश्राम करो, मैं स्नान करके आता हूँ। आप जो खड़े हो जमुना के घाट पर ही खड़े हो, और जब जमुना नहीं बहती थी उस समय जमुना का भंडार 1.25 कोस का था। आज कितना है, आज तो बहुत कम है, कलयुग का प्रभाव से। तो उस जब वो जमुना के अंदर अक्रूर जी डुबकी लगा रहे थे तो क्या देख रहे थे, शेष सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, कुछ देवता आरती कर रहे हैं, कुछ स्तुति गा रहे हैं, कुछ फूल बरसा रहे हैं। अक्रूर जी बड़े ध्यान से एक तक उनको निहार रहे हैं, निहार धोना भूल गए। वो देख रहे साक्षात नारायण जल के अंदर कहाँ से आ गए। वो सोचने लगे, मैं खड़े होते हैं, वो देखते हैं रथ पर भी वही सब दिखाई देता है और वही जल के अंदर। मन ही मन सोचने लगे, अब तो दोबारा डुबकी लगाता हूँ, देखता हूँ कि है कि नहीं। उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई, फिर खड़े हुए, फिर बोले अब के फिर दोबारा लगाता हूँ। ऐसे ही उन्होंने अनेकों बार डुबकी लगाई, वही स्वरूप जल के अंदर और वही स्वरूप रथ के ऊपर दिखाई दिया। अक्रूर जी व्याकुल होकर के जैसे ही भगवान के चरणों में रथ पर गिरे, भगवान ने योग माया हटा दी और बच्चे रूप में खड़े हो गए। बोले, अरे काका आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारे चरणों पर क्यों गिर रहे हो, आप हमारे काका हैं। वो बोले, नहीं मैंने साक्षात नारायण को देखा है, जल में भी देखा है, यहाँ भी देखा है। भगवान ने बोले, अरे भैया हम 2 ही तो बच्चे हैं, ऐसा तो यहाँ और कोई है नहीं, आपने भगवान को कहाँ से देख लिया। बोले, नहीं मैंने देखा है। जब भगवान जीव को मृत्यु लोक पर भेजता है तो माया के बंधन में बांध देता है और कहता है कि तू अपनी माया
मेरे पास मत आ, तू वहाँ सुखी है तो मैं यहाँ सुखी हूँ। जब जैसे इंसान कहते हैं कि नहीं मुझे संसार से मतलब नहीं है, मैं तो तेरे पास आया हूँ, तो भगवान आने में देर नहीं करते हैं। जैसे सुदामा जी जब अपने आप पर निर्भर थे तो भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखा। जब सुदामा जी ने संकल्प ले लिया कि मुझे कन्हैया से मिलना है और जाना है, तो भगवान नंगे पैर दौड़े आए थे। ऐसे ही अक्रूर जी हट पर गए, मैंने जल के अंदर देखा है, मैंने रथ पर भी देखा है। तो अक्रूर कन्हैया जी चतुर्भुज उठा करके खड़े होकर कहा, हे अक्रूर जी, मैं ही पारब्रह्म परमेश्वर हूँ। भगवान ने हर समय काका ही कहा है, केवल यहीं पर भक्त और भगवान का रिश्ता होने के कारण उन्होंने अक्रूर जी कहा है। कहा है अक्रूर जी, मैं ही पारब्रह्म परमेश्वर हूँ, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। आप जो चिंता कर रहे हो वो व्यर्थ कर रहे हो। कंस को मैं मारूंगा, कंस मुझको नहीं मारेगा। और ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जल से आचमन लिया है और अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी का मन शुद्ध किया है, क्योंकि हमारा जो मन है भ्रमित होता है, मन ही चलामान होता है, मन ही इंसान को भटकाता है। जब उनका मन शुद्ध हो गया, उनको विश्वास हो गया कि मेरे स्वयं सात कारणहार है, साक्षात नारायण है, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो यहाँ से आगे गए हैं, यहाँ तक यही मिला है, बोलो अक्रूर जी महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे श्याम। है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी बैठे थे। ये अक्षय वट देखो आप, ये अक्षय वट कैसे है, ये अंदर ही अंदर फूटता है। जैसे कोई महात्मा अपने तप पर बैठा हो और उसके प्राण जाने से पहले वो दूसरे प्राण आ जाएं, जैसे कि अपने ही तप के बल से प्राणों को छोड़ते थे, अपने ही तप के बल से प्राणों को लेते थे, वही ये वृक्ष है। आओ अब आगे धीरे धीरे आते रहो। देखो देखो यहाँ से देखो, ये अंदर अंदर खोखला है, दिखाई दे, अंदर अंदर देखो, अंदर अंदर खोखला दिखाई दे रहा है। दो शाखा चल रही है इसके अंदर, ये चल रही, देखो दो शाखा चल रही है, ये अंदर ही अंदर ही फूटता है। अच्छा। इसी वृक्ष में पांडवों को आने के कारण यहाँ 5 वृक्ष है, एक ही जड़ में 5 वृक्ष है। अच्छा। वट वृक्ष, पीपल, पापरी, मखई, हीस, इसमें एक ही जड़ में है ये। अच्छा। और आप देखिए साक्षात उस वृक्ष में हनुमान जी की आपकी तस्वीर लग जाएगी। देखो यहाँ लगाओ, यहाँ पूरे हनुमान जी की जो आप दर्शन करके आए हैं वही छवि आपको हनुमान जी की इसमें नजर आएगी। दिखाई दे। हाँ। जो आप मुखार बिंदु में जो जगन्नाथ जी में है ना, जो दिखलाते हैं, वही शिला आपको इस जगह नजर आएगी। इसको ना इस साइड में पूरी शिला आपको जो मुखार बिंदु में है वही शिला, क्योंकि यहाँ जो हनुमान जी लाए थे जगन्नाथ जी की वही छवि है यहाँ पर। ये अक्षय वट है, अजर अमर, इसकी कभी कुछ ना होने वाला, तो वट छवि। अच्छा। इस जगह से इस वृक्ष में एक नाग देवता वास करते हैं। अच्छा। हाँ, उनका इतना बड़ा फन है, इतने मोटे हैं, दाढ़ी है उनके, वो यहीं से निकलते हैं और हनुमान जी की परिक्रमा लगाते हैं और इसी में चले जाते हैं। आप देखते हैं? हाँ, उनको बहुत लोगों ने दर्शन किया, हमने भी दर्शन किया उनको। अच्छा। हाँ, यहाँ पर उनका जो महाभोग लगता है हनुमान जी के आगे, माता अंजनी के आगे, वही भोग यहाँ लगता है। वही हाँ, यही स्थान है, यहाँ यहीं से निकलते हैं और यहीं पर आकर के ये यहाँ की विशेषता है। और ये सब मेंटेन कौन करते हैं? ये सब भक्त लोगों के आधार पर हिसाब है। अच्छा। In my previous video Vrajavasis, Gopas becoming grief-stricken at Krishna's leaving Vrindavana is explained in detail. After this pastime His Divine Grace Srila Prabhupada explains the pastime of Akrura's return journey and his visiting of Vaikuntha within the Yamuna river. The Lord, accompanied by Akrura and Balrama, drove the chariot with great speed towards the bank of the Yamuna. Simply by taking a bath in the Yamuna, anyone can diminish the reaction of his sinful activities. Both Krishna and Balrama took their baths in the river and washed their faces. After drinking the transparent crystal clear water of the Yamuna, they took their seats again on the chariot.
The chariot was standing underneath the shade of big trees, and both brothers sat down there. Akrura then took their permission to also take bath in the Yamuna. According to Vedic ritual, after taking bath in the river, one should stand at least half submerged and murmur the Gayatri mantra. While he was standing in the river, Akrura suddenly saw both Balrama and Krishna within the water. He was surprised to see them there because he was confident that they were sitting on the chariot. Confused, he immediately came out of the water and went to see where the boys were, and he was very surprised to see that they were sitting on the chariot as before. When he saw them on the chariot, he began to wonder whether he saw them in the water. He therefore went back to the river. This time he saw not only Balrama and Krishna there, but many of the demigods and all the Siddhas, Karanas, and Gandharvas. They were all standing before the Lord, who was lying down. He also saw the Sasanaga with thousands of hoods. Lord Sasanaga was covered with bluish garments, and his necks were all white. The white necks of Sasanaga appeared exactly like snow-capped mountains. On the curved lap of Sasanaga, Akrura saw Krishna sitting very soberly, with 4 hands. His eyes were like the reddish petals of the lotus flower. In other words, after returning, Akrura saw Balrama turned into Sasanaga and Krishna turned into Mahavishnu. He saw the 4-handed Supreme Personality of Godhead, smiling very beautifully. He was very pleasing to all and was looking towards everyone. He appeared beautiful with his raised nose, broad forehead, spread up ears and reddish lips. His arms, reaching to the knees, were very strongly built. His shoulders were high, his chest very broad and shaped like the conch shell. His navel was very deep, and his abdomen was marked with 3 lines. His waist was broad and big, resembling the hips of a woman, and his thighs resembled the trunks of elephants. The other parts of his legs, the joints and lower extremities, were all very beautiful. The nails of his feet were dazzling, and his toes were as beautiful as the petals of the lotus flower. His helmet was decorated with very valuable jewels. There was a nice belt around the waist, and he wore a sacred thread across his broad chest. Bangles were on his hands and armlets on the upper portion of his arms. He wore bells on his ankles. He possessed dazzling beauty, and his palms were like the lotus flower. He was still more beautiful with different emblems of the Vaishnu Murti, the conch shell, club, disc and lotus flower, which he held in his 4 hands. His chest was marked with the particular signs of Vishnu, and he wore fresh flower garlands. All in all, he was very beautiful to look at. Akrura also saw his lordship surrounded by intimate associates like the 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sananda, and Sanatkumara, and other associates like Sunanda and Nanda, as well as demigods like Brahma and Lord Shiva. The 9 great learned sages were there, and devotees like Prahlada and Narada were engaged in offering prayers to the Lord with clean hearts and pure words. After seeing the transcendental personality of Godhead, Akrura immediately became overwhelmed with great devotion, and all over his body there was transcendental shivering. Although for the moment he was bewildered, he retained his clear consciousness and bowed down his head before the Lord. With folded hands and faltering voice, he began to offer prayers to the Lord. Akrura offered his prayers as follows: My dear Lord, I here pay my respectful obeisances unto you because you are the supreme cause of all causes and the original inexhaustible personality, Narayana. From your navel a lotus flower grows, and from that lotus, Brahma, the creator of this universe, is born. Since Brahma is the cause of this universe, you are the cause of all causes. All of the elements of this cosmic manifestation, earth, water, fire, air, ether, ego and the total material energy, as well as nature, the marginal energy, the living entities, mind, senses, the sense objects and the demigods who control the affairs of the cosmos are all produced from your body. You are the super soul of everything, but no one knows your transcendental form. Everyone within this material world is influenced by the modes of material nature. Demigods like Lord Brahma,
being covered by the influence of material nature, do not exactly know your transcendental existence beyond the cosmic manifestation of the three modes of material nature. Great sages and mystics worship you as the Supreme Personality of Godhead, the original cause of all living entities, all cosmic manifestation and all demigods. They worship you as all-inclusive. Some of the learned Brahmanas also worship you by observing the ritualistic ceremony of the Vrajavada. They offer different kinds of sacrifices in the names of different gods. And there are others also who are fond of worshipping transcendental knowledge. They are very peaceful and wish to give up all kinds of material activities. They engage themselves in the philosophical search for you, known as Jnana Yoga. There are devotees also known as Bhagavatas who worship you as the Supreme Personality of Godhead. After being properly initiated in the method of Pancaratra, they decorate their bodies with tilaka and engage in worshipping your different forms of Vishnumurti. There are others also, known as Saivites, followers of the different Takriyas, who worship you in the form of Lord Shiva. It is stated in the Bhagavad Gita that worship of demigods is also indirectly worship of the Supreme Lord. But such worship is not orthodox, because the worshipable Lord is the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Demigods such as Brahma and Shiva are incarnations of the material qualities, which are also emanations from the body of Narayana. Actually, there was no one existing before the creation except Narayana, the Supreme Personality of Godhead. The worship of a demigod is not on the level with worship of Narayana. Akrura said, although the minds of those who are devotees of the demigods are fixed on a particular demigod, because you are the super soul of all living entities, including the demigods, worship of demigods indirectly goes to you. Sometimes, after flowing down from the mountains during the rainy season, small rivers fail to reach the sea, some reach the sea and some do not. Similarly, the worshippers of the demigods may or may not reach you. There is no guarantee. Their success depends on the strength of their worship. According to Vedic principle, when a worshipper worships a particular demigod, he also conducts some ritual for Narayana, Yajnansvara, for it is mentioned in Bhagavad Gita that demigods cannot fulfill the desires of their worshippers without the sanction of Narayana, or Krishna. The exact words used in the Bhagavad Gita are Ma Yeva Vihitanhaitan, which means that the demigods can award some benediction after being authorized by the Supreme Lord. When the demigod worshipper comes to his senses, he can reason as follows: the demigod can offer benediction only after being empowered by the Supreme Lord, so why not worship the Supreme Lord directly? Worshippers of the demigods may come to the Supreme Personality of Godhead, but others, who take the demigod as all in all, cannot reach the ultimate goal. Akrura continued to pray, "My dear Lord, the whole world is filled with the three material modes of nature, namely, goodness, passion and ignorance. Everyone within this material world is covered by these modes, from Lord Brahma down to the immovable plants and trees. My dear Lord, I offer my respectful obeisances unto you, because you are beyond the influence of the three modes. Except for you, everyone is being carried away by the waves of these modes. My dear Lord, fire is your mouth, the earth is your feet, the sun is your eye, the sky is your navel, and the directions are your ears. Space is your head, the demigods are your arms, the oceans and seas are your abdomen, and the winds and air are your strength and vitality. All the plants and herbs are the hair on your body, the clouds are your hair, the mountains are your bones and nails, the days and nights are the twinkling of your eyelids. Prajapati, the progenitor, is your genitals, and the rains are your semina. My dear Lord, all living entities, including different grades of demigods, different grades of overlords, kings and other living entities, are supposed to be resting in you. As part and parcel of the big unit, one cannot know you by experimental knowledge. One can simply understand your transcendental existence as the great ocean in which different grades of living entities are included, or as the fruit kadamba out of which small mosquitoes come. My dear Lord,
Whatever eternal forms and incarnations you accept and which appear in this world are meant for relieving the living entities from their ignorance, illusion and lamentation. All people, therefore, can appreciate the incarnations and pastimes of your lordship and eternally glorify your activities. No one can estimate how many forms and incarnations you have, nor can anyone estimate the number of universes that are existing within you. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the incarnation of fish, who appeared in devastation, although your lordship is the cause of all causes. Let me offer my respectful obeisances unto the high Akrura incarnation who killed the two demons, Madhu and Ktabha. Let me offer my respectful obeisances unto you who appeared as the gigantic tortoise and held up the great mountain Mandal, and who appeared as the boar who rescued the earth planet which had fallen into the water of Garbhodaka. Let me offer my respectful obeisances unto your lordship, who appeared as Nrsimhadeva, who delivered all kinds of devotees from the fearful condition of atheistic atrocities. Let me offer my respectful obeisances unto you who appeared as Vamanadeva and covered the three worlds simply by expanding your lotus feet. Let me offer my respectful obeisances unto you who appeared as the Lord of the Brigas in order to kill all the infidel administrators of the world. And let me offer my respectful obeisances unto you who appeared as Lord Rama to kill demons like Ravana. You are worshipped by all devotees as the chief of the Raghu dynasty, Lord Ramakandra. Let me offer my respectful obeisances unto you who appeared as Lord Vasudeva, Lord Sankarsana, Lord Pradama, and Lord Anuruddha. Let me offer my respectful obeisances unto you, who appeared as Lord Buddha in order to bewilder the atheistic and demoniac. And let me offer my respectful obeisances unto you, who appeared as Kalki in order to chastise the so-called royal order degraded to the abominable condition of the mlechas, who are below the jurisdiction of Vedic regulative principles. My dear Lord, everyone within this material world is conditioned by your illusory energy. Under the impression of false identification and false possession, everyone is transmigrating from one body to another in the path of fruitive activities and their reactions. My dear Lord, I am also no exception to these conditioned souls. I am falsely thinking myself happy in possessing my home, wife, children, state, property and effects. In this way I am acting as if in a dreamland because none of these are permanent. I am a fool to be always absorbed in such thoughts, accepting them as permanent and true. My dear Lord, due to my false identification, I have accepted everything which is non-permanent, such as this material body, which is not spiritual and is the source of all kinds of miserable conditions. Being bewildered by such concepts of life, I am always absorbed in thoughts of duality, and I have forgotten you who are the reservoir of all transcendental pleasure. I am bereft of your transcendental association and am just like a foolish creature who goes in search of water in the desert, leaving the water spot which is covered by water-nourished vegetables. The conditioned souls want to quench their thirst, but they do not know where to find water. They give up the spot where there is actually a reservoir of water and run into the desert where there is no water. My dear Lord, I am completely incapable of controlling my mind, which is now driven by the unbridled senses and is attracted by fruitive activities and their results. My dear Lord, your lotus feet cannot be appreciated by any person in the conditional stage of material existence, but somehow or other I have come near your lotus feet, and I consider this to be your causeless mercy upon me. You can act in any way because you are the supreme controller. I can thus understand that when a person becomes eligible to be delivered from the path of repeated birth and death, it is only by your causeless mercy that he further progresses to become attached to your causeless devotional service. Akrura fell down before the Lord and said, My dear Lord, your transcendental eternal form is full of knowledge. Simply by concentrating one's mind upon your form, one can understand in full knowledge everything that be, because you are the original source of all knowledge. You are the supreme powerful, possessing all kinds of energies. You are the supreme Brahman and the supreme person, supreme controller and master of the material energies.
I offer my respectful obeisances unto you because you are Vasudeva, the resting place of all creation. You are the all-pervading Supreme Personality of Godhead, and you are also the Supreme Soul residing in everyone's heart and giving direction to act. Now, my Lord, I am completely surrendered unto you. Please give me your protection. पुत्र हनुमान की जय, रामदूत हनुमान की जय। ये जो पंचमुखी हनुमान जी देख रहे हैं आप, ये स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं। जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उस समय सेतु का निर्माण हुआ था। तो नल नील कहने लगे महाराज पत्थर कम पड़ेंगे। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ पर्वत लेके आओ। तो हनुमान जी 2 पर्वत गए थे, वहाँ उनके बेटे गिरिराज जी से मिले। तो उनसे कहा चलो मैं प्रभु राम से मिलाऊंगा और उनके कार्य में तुम काम आओगे। तो गिरिराज जी बड़े खुशी हुए, अंदर अंदर मग्न हुए कि मुझे प्रभु राम के कार्य में जाने का सौभाग्य मिला है और उनके दर्शन करने का। तो ये सोच करके वो बड़े आनंदित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरे सगे संबंधी मेरे पिता को छोड़ दिया और मुझे प्रभु ने बुलाया है, तो इसमें भी मेरा कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो जब वो हनुमान जी के साथ साथ वहाँ से चले, आधे रास्ते में आ गए थे, तो राम जी का संदेश पहुँचा कि हनुमान जी कहाँ हो। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं आधे रास्ते में आ गया हूँ। उस समय मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन ये नाम नहीं थे, केवल वन ही था लेख के अनुसार। तो राम जी ने कहा हनुमान जी कार्य संपन्न हो गया है, इसको वहीं स्थापित करो। और जब हनुमान जी ने उनको वहाँ स्थापित करके आगे बढ़ने लगे तो गिरिराज जी कहने लगे अरे महाराज ये आपने क्या किया, ना तो मैं पिता का रहा और ना प्रभु का, आपने तो मुझे जंगल में छोड़ दिया। तो हनुमान जी कहने लगे ये प्रभु की इच्छा है, वो आने की नहीं, आपने मेरे साथ में बड़ा धोखा किया है। तो हनुमान जी ने राम जी से वही बात कही कि प्रभु ये तो इस तरह कह रहे हैं। तो राम जी ने कहा इनसे बोल दो कि हम अगले अवतार में इनसे जरूर मिलेंगे। और इतना कह करके हनुमान जी वहाँ से लंका की तरफ चल दिए। यहाँ हनुमान जी ने शीतल छाया देखी तो उनके मन में विचार आया कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूँ। और विश्राम करके जब हनुमान जी आगे बढ़े तो ये मूर्ति साक्षात प्रकट हुई थी। जब भगवान कृष्ण अवतार में द्वापर युग में आए थे तो उन्होंने गोवर्धन को, ये गिरिराज जी हैं, उनको अपने उंगली पर धारण किया और उनको अपना नाम दिया गिरिराज। गोवर्धन से गिरवर कर दिए वो। तो जब भगवान पर जिसकी कृपा होती है उनको वो अपना ही नाम देते हैं। ये यहाँ का एक लेख है। दूसरा लेख यहाँ का ये है, जब महाभारत हुआ था, महाभारत होने के बाद में पांडव भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे महाराज हमने बहुत हत्याएँ की है। तो भगवान कहने लगे तो क्या करना चाहते हो। तो वो बोले महाराज हम कुछ समय भजन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अक्रूर घाट जाओ, जहाँ मुझे वो स्थान अपने हृदय से ज़्यादा प्रिय है। वहाँ मैंने 11 साल 56 दिन की उम्र में सबसे पहले अक्रूर जी को ब्रह्म ज्ञान दिया है। वो स्थान वैकुंठ से बढ़कर है, वहाँ जाओ और वहाँ तुम भजन करो। तो पांडवों ने कुछ समय यहाँ भजन किया था। तीसरा लेख यहाँ का ये आता है, जब हमारा ब्रजमंडल लुप्त हो गया था तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, वो आए। उन्होंने नवद्वीप से सीधे इसी जगह पर आकर के बैठे और यहाँ आकर के उन्होंने इस सबसे पहले ये मंदिर नहीं था, केवल ये प्रतिमा थी। प्रतिमा के ही इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने एक रात एक दिन उन्हीं को निहारते रहे। क्योंकि जब भगवान राम अवतार में अपने धाम को गए थे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूँगा। तो भगवान ने कहा जब जब मैं पृथ्वी पर आऊँगा तब तब मैं तुमसे ही मिलूँगा और तुम्हारी ही सहायता लूँगा। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले हनुमान जी के ही दर्शन किए और इन्हीं से मिले। इसके बाद में यहीं से उन्होंने पूरे 84 कोस की जो यात्रा है उसमें भागवत के अनुसार 360 बैठक हैं, वो यहीं से ही खोज की है। ये यहाँ के 3 लेख हैं, दोनों चैतन्य महाप्रभु। Whenever I upload new video, I update homepage glories of Holy Dhamma of my website vatikandustan.org and also under menu. You can also press the YouTube subscribe button to receive notification.
I am thankful to my subscribers and viewers for their support in my small devotional service for Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.